Hello, guys. Welcome back to the Rover Vibes Fitness, Wellness, and Lifestyle Solutions. I'm your host and coach, Rahul Aryan. I'm with psychic tarot card reader Samara. Hi तो guys, how are you? आज का सेशन जो है सिजिल मैजिक पे है। ठीक है, जिस तरह से आप देख भी पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पे, अपने डेस्कटॉप पे, उस पे सीधे सीधे लिखा हुआ है सिजिल मैजिक। आफ्टर दैट फ्री टैरो कार्ड रीडिंग विद समारा। ठीक है, तो आज की जो टैरो कार्ड रीडिंग भी होने वाली है वो भी काफी स्पेशल होने वाली है, क्योंकि ये न्यू टैरो डेक से की जाने वाली रीडिंग होगी। Yes, this deck is called Messages from Heaven. Okay, so Sigil Magic के ऊपर there were a lot of inquiries which were made, and we were told and we were asked that what it is, how it has to be done. So काफी time से हम इसको postpone करते हुए आ रहे हैं because of certain things, on our business front and the personal front, and finally we are live today. यस, Yes. ठीक है, और भी बैकएंड में काफी चीजें चलती रहती हैं, जैसे सिजिल मैजिक। ये खासा कोई ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसकी बहुत लाइव देखने को मिलता हो। जैसे आप लोग टैरो कार्ड रीडिंग काफी देखते होंगे, लाइव आती रहती हैं, बहुत सारे साइकिक और टैरो कार्ड रीडर्स लाइव आते रहते हैं और मैसेजेस वगैरह आपको बताते रहते हैं, काफी हेल्प करते हैं अदर जो लोग हैं, कम्युनिटी है। लेकिन कुछ इस तरह का मैंने आज से पहले ना तो कभी सुना था ना कभी देखा था, सिजिल मैजिक। Right. तो सिजिल मैजिक है क्या, किस तरह से किया जाता है, मैजिक को डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हैं सिजिल से, तो उस चीज पे हम सारी बात करने वाले हैं। Anyway, hi Rover, Hi, still doing Anne. reading. Yes, we're still doing readings, but we will be talking about Sigil Magic first, and then we are going to do readings. You need to stay with little patience. Yes, please be patient when we're going to. After that, we will give you tarot card reading, not Yes. sigil magic reading. So before we start the session, please like and share this feed. So guys, अगर आपको टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए, so you need to like this page and share this feed as much as you can. ठीक है, और बाकी का आपको मालूम ही है। ठीक है, YouTube पे भी आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, Instagram पे हमें फॉलो कर सकते हैं, बाकी अदर प्लेटफॉर्म पे भी हम अवेलेबल हैं, लाइक ट्विटर एंड फेसबुक पे तो आप देख ही रहे हैं वैसे। Yes, absolutely. Yeah. हाँ जी, तो ज्यादातर मैंने ये सिजिल मैजिक नाम की चीज सुनी नहीं है। ठीक है, इनफैक्ट आज मैं बता रहा था कि आज से पहले मैंने सच कभी इस तरह का सुना भी नहीं है। ठीक है, तो उसी चीज के बारे में हम बात करने जा रहे हैं आज, जो कि सिजिल मैजिक है। और तो अभी थोड़ी ही देर में ये जो हम सिजिल मैजिक से जुड़ी हुई बातें हैं ये सारी करने वाले हैं। तब तक गाइस आप इस फीड को शेयर करते रहिए। हाय, गुड इवनिंग, हाउ आर यू बोथ? हाय रेखा जी, वी आर गुड, वी आर गुड। And Mac, yes, Sigil and Hope you are Tarot, well this too. is interesting. Hi Rekha ji, how are you? Yeah, Sigil and Tarot, this is interesting because here we are going to be talking about how to do your own personalized Sigil magic. इसकी काफी workshops होती हैं, and since this is a part of our community service, we are just giving this free of cost. Okay, we are giving the basic, free of cost to you. So whoever is interested in doing this magic, and whoever is interested in doing, and when you talk about magic, magic is nothing but setting your intention and making your wishes come true, right? So it is a very very natural process जिसे magic कह के थोड़ा hype दिया जाता है. Okay, so इस बारे में हम बात करेंगे. So guys, I'm just waiting for you to share this feed in a few groups, and let's spread this awareness among other people as well, because yes, like Anne said, this is a very interesting series, and इसके लिए there are certain things which we have prepared also, which we are going to share with you. रेखा शर्मा जी लिखते हैं, सिजिल इज न्यू फॉर मी, लाइकवाइज Yeah, आल्सो न्यू फॉर मी also टू। new for him, right? तो सिजिल अभी बहुत सारी चीजें हैं, थोड़ा मेरे को समझाया था तो खासा कुछ समझ में आया नहीं, तो यहाँ पे होपफुली मुझे भी समझ में आए और आप सबको भी। ठीक है, इन द मीन टाइम प्लीज गाइस शेयर दिस फीड। ठीक है, तो रीच ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। सिजिल मैजिक से की जो इंफॉर्मेशन है और जो भी हम इसके बारे में बताना जा रहे हैं और फ्री टैरो कार्ड रीडिंग देना चाह रहे हैं, उससे औरों को भी फायदा मिलना चाहिए। और आपको अगर फ्री टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए तो सिजिल मैजिक के जस्ट सेशन के बाद
थोड़ा सा वेट करना होगा। आप फिर आपको शेयर करनी होगी ये फीड, जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं आपके नेम के ऊपर शेयर बैज ऑप्शन, वो टैग आ जाएगा एक तरह का, ठीक है। तो और साथ ही आपको फेसबुक पे, जिसपे हमें आप देख पा रहे हैं, द रोवर वाइब्स को लाइक करना होगा अगर आपने लाइक नहीं किया है तो। Otherwise, you can go ahead and like our YouTube channel, and we can give the link for the channels. And also say this. और गाइज एक चीज और बताना चाहूंगा मैं, जैसे कि हम हर मंथ की सनसाइन की रीडिंग डाल देते हैं, तो वहीं अभी सितंबर सनसाइन की रीडिंग डाल दी गई है हमने। लगभग सभी अपडेट हो चुकी हैं अभी तक। Yes, हाँ, everything is यूट्यूब पे updated. सभी अपडेट हो चुका है, तो आप अपने सनसाइन के अकॉर्डिंग अपनी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। अपने गाइडेंस देख सकते हैं एक तरह से, ठीक है, सितंबर की। और पुरानी तो आप देखते ही होंगे। Yes, in fact, last month was absolutely wonderful. राइट। Right. Okay, और so सिजिल मैजिक से जुड़ी हुई अगर आपको कुछ भी कोई क्वेश्चन हो आपके माइंड में, बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। तो समारा बिल्कुल ओपन है, ठीक है, आपके क्वेश्चन लेने के लिए, ठीक है। और सिजिल मैजिक, मैं बता रहा था सिजिल मैजिक के बारे में कि जल्दी ही हम इस फीड को इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि सिजिल मैजिक के बारे में ज्यादातर लोग बोलते भी नहीं हैं, और मैजिक नाम का जहां वर्ड जुड़ जाता है तो लोगों के माइंड में पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, किस तरह के थॉट्स ज्यादा आते हैं वो आप समझ सकते हैं। yes, people actually, relate it with witchcraft, and witchcraft is actually not bad if you're doing it for the right intentions. Okay, so your Wicca, occult, and all of these things depends on what is there in its inside of you. So, अगर आपका intention pure है, and if you're doing these things, it's actually called white magic. And sigil magic can be white magic if you want to do it for the right reasons. Okay, these reasons should be for the benefit of you and for the goodness of all, not to harm anybody and not to take revenge, or get your things which you know that you don't deserve entirely. So इस सारी उल्टी सीधी चीजों के लिए आप ना करें तो ज्यादा बेटर है, because there's a price for everything, and when I say there's a price for everything, it seriously means कि अगर आपकी इंटेंशन अगर गलत होगी तो वही चीजें आपकी लाइफ में भी मैनिफेस्ट होंगी. दिस इज अ सिंपल लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रिंसिपल. सो इस पे कोई डर वाली बात नहीं है, सिंपल लॉजिक है. या राइट। तो सिजिल मैजिक की एक पढ़ाई भी होती है जो कि ये कर रही थी, ठीक है। तो जब तक पूरी क्लैरिटी नहीं मिली उस चीज पे, जब तक वो सारी चीजें सीख के सर्टिफाइड होके एक तरह से, मतलब नेचर से ही, यूनिवर्स से ही एक कॉल नहीं आया कि ये करना चाहिए, तब तक नहीं किया था, absolutely. ठीक है। तो अभी वो कॉल आया है और हम आपके सामने हैं। Yeah, which is why we're now doing it. So let's start. जी। तो पहला तो मैं सबसे पहले यही पूछना चाहूंगा, व्हाट इज सिजिल मैजिक? Like I just mentioned right now, sigil एक diagram है. Okay, it is just pictorial representation. उसको use करके when you do magic, that is when you make your wishes come true using that. That simply means sigil magic. So कोई complication वाली बात नहीं. It is very easily understood. इसके पीछे मैं कोई आपको theories नहीं दूंगी. I just want to make this be very simple, and I want to just cover it in like 10-15 minutes. It doesn't take more than that. So that is like good to do information. मतलब working knowledge बहुत काफी है अगर आप इसको करना चाहें तो. लेकिन जहां तक कि मैं देख पा रहा हूँ, आपने अगर डेफिनेशन में काफी कुछ पढ़ा है इसके, ठीक है, तो थोड़ा और टच देके अगर इसको डीप समझाया जाए तो व्हाट इज सिजिल? एक्चुअल में सिजिल होता क्या है? Okay. See, sigil is a type of a symbol which is used in magic, like I said just now. And the term, as in the sigil, is actually referred to a type of pictorial signature. Okay? Okay, it's the representation of a god or a goddess or deities, like Hinduism में कितने सारे gods and goddesses हैं. So ऐसे ही there are gods and goddesses and deities या कोई spirits हैं. Okay? When it comes to spirits, there are good spirits and bad spirits. But anyway, ये जो एक पिक्टोरियल सिग्नेचर होता है जिसको हम एक सर्कल में डिपिक्ट करके वी मेक डिफरेंट डायग्राम्स एंड लाइन इधर से उधर जाती है एंड ऑल दैट, ये सब जब हम करते हैं, सो ये कुछ नहीं है, ये सिजिल होती है. इट्स वेरी सिंपल. ओके। सो ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है आपके डिजायर्ड आउटकम के लिए, ठीक है. एंड इफ आई एम अ पर्सन हु इज डूइंग दिस मैजिक, आई बिकम मैजिक प्रैक्टिशनर. Okay, so I'm just practicing it to get the things that I want. Okay,
एंड सबसे बेसिक इसमें प्रिंसिपल क्या है, ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है, फेथ होना बहुत जरूरी है, विदाउट दिस नथिंग वर्क्स। हाँ, ये तो खैर सिजल्स में नहीं, अदर भी सारी चीजों में ही एब्सोल्युटली ये ठीक सारा। है अप्लाई होता है। ये सेम प्रिंसिपल हर जगह अप्लाई होता है कि अगर आप किसी चीज पे फेथ नहीं रखते हो या ट्रस्ट नहीं करते हो या उसको मतलब बिलीव ही नहीं कर सकते कि ऐसा हो ही नहीं सकता, तो वो Absolutely. चीजें आपके लिए जहां काम 100 करनी चाहिए वहां पे 100 की शायद 10 भी कर जाए तो बड़ी ही बात है। बड़ी बात है, एब्सोल्युटली। ठीक है, तो व्हाट कैन यू डू विद सिजल्स? What you can do with sigils, you can do absolutely anything with sigils. You can have intentions for yourself. Like there are general sigils, okay, जो कि different intentions के लिए होती है, बड़ी basic intentions होती है जो मैं अभी बताऊंगी. But otherwise आप कुछ भी कर सकते हो, and कुछ भी करने के लिए I will just say after doing all of this study, what I have come to realize it is nothing but a law of attraction technique, जो कि ये law of attraction में पढ़ाया जाता है, like attracts like. ओके, सो जैसा आप सोचोगे वैसा आप पाओगे, आओ। ठीक है। सो वट एवर यू थिंक इज योर रियलिटी। सो अपना जो थॉट्स हैं, अगर आप पॉजिटिव रखोगे तो आपकी लाइफ पॉजिटिव होगी। इफ यू कीप डाउट्स एंड वरीज इन योर लाइफ, इन योर माइंड, दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट। एंड सिजिल इज नथिंग बट अ way to condition your mind to believe into something that you want, क्योंकि जब आपके अंदर वो belief system जाता है, जब आप उस चीज में फेथ करते हो, जो आप ट्रस्ट करते हो, सो वो एक सिर्फ एक डिपिक्शन है, वो एक तरीका है जो आपको फिजिकल रियलिटी में दिख रहा है। बिकॉज जब आप सिजिल बनाओगे तो दिखेगी ना सिजिल आपको, तब आपको बिलीव होगा कि हाँ मैंने कुछ किया है, राइट। सो ये उन लोगों के लिए है जो कि अपने माइंड का यूज उस तरह से नहीं कर पाते, अपने माइंड को चैनलाइज नहीं कर पाते या कंडीशन नहीं कर पाते इनटू समथिंग गुड। सो दिस इज वन ऑफ द टेक्निक्स दैट यू कैन डू टू get the law of attraction working for you. So this is the simplest that I can tell you. और जिस तरह से आपने पहले ही बता तो सॉरी, हाँ, जैसे आपने पहले ही बताया इंटेंशन सिजल्स, तो इंटेंशन सिजल से मतलब क्या है एक्चुअल में? Intention sigils से पहले I would like to actually talk about general sigils here, right? Like I said that they are general sigils. They are more like basic intentions के लिए होती है। इसमें हमने काफी पोस्ट भी डाले हुए हैं। सो देर आर सिजिल्स फॉर न्यू बिगिनिंग। अगर आपके पास कोई अपनी सिजिल आप पर्सनलाइज नहीं बनाना चाहते हो तो आप बनी बनाई सिजिल्स जो होती हैं वो सिर्फ इंटेंशन बेस्ड आप यूज कर सकते हो। तो ऐसी 4 सिजिल्स आई एम शेयरिंग ओवर हियर। ओके, दीज आर 4 सिजिल्स। फर्स्ट वन इज फॉर प्रोटेक्शन, the other one is for, sorry, the first one is for the new beginnings, the second one is for protection, which I am sharing over here. Okay. Then there is one for your intuition, अपनी intuition को बढ़ाने के लिए। Protection means आप कोई भी intention चाह सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप न्यू बिगिनिंग के लिए चाहते हो तो आप न्यू बिगिनिंग कहाँ चाहते हो, इन योर लाइफ, इन योर रिलेशनशिप्स, इन योर करियर, वेयर डू यू वांट दैट न्यू बिगिनिंग। ओके, देन यू टॉक अबाउट प्रोटेक्शन। प्रोटेक्ट किसको करना चाह रहे हो, खुद को करना चाह रहे हो, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो, अपने हाउस को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो, व्हाट आर यू ट्राइंग टू प्रोटेक्ट, तो वो इंटेंशन रख के आप ये सिजल क्रिएट करिए। इंट्यूशन के लिए अपना थर्ड आई चक्रा, that is what you need to improve when you talk about intuition, and somehow it is also connected to your seventh chakra, which is your crown chakra. So ye intuition based sigils है which actually activates it, but you need to believe in that. And then connect with your higher self. Connect with your higher self is what? Your subconscious mind, which is always at work, which is never sleeping, which is always there. How to connect with your subconscious mind, because every being is capable of getting channelized, channel messages from the divine. How do you connect with your higher self? So these are the few sigils that I want to share, which are very easy and practical and anybody can do it. So this is what I wanted to talk about, general sigils. और इंटेंशन सिजल्स की बात करें तो इंटेंशन sigils होती है जो आप पर्सनलाइज क्रिएट करते हो ना। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग व्हिच आई वुड लाइक टू शेयर. This is the study that I did and I'm just sharing this, free of cost for the people who would like to, understand it. Now, what happens is that आपको ये चीजें बड़ी इजी हैं। इंटेंशन का मतलब है आप एक अपनी इंटेंशन सेट करिए प्रेजेंट टेंस में। आई एम हैप्पी, दैट्स योर इंटेंशन। सो इफ यू वांट टू बी हैप्पी, you write that I am happy. That's your intention. Yeah, I want so and so money. So you will just write I have $10,000, right?
सो एक इंटेंशन बेस्ड है, तो इस इंटेंशन पे भी आप सिजिल बना सकते हो पर्सनलाइज करके. सो दैट इज समथिंग व्हिच आर पर्सनलाइज सिजिल्स, जो कि मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर कैसे बनानी है. ऑलराइट. तो क्रिएट किस तरह से की जाती है? हाउ टू क्रिएट दिस? सबसे पहले यू कैन क्रिएट योर ओन पर्सनल सिजल्स बाय द इंटेंशंस दैट आई सेड. सो आप अपनी डिजायर बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट कर सकते हो. इसके साथ यू कैन हैव अ लॉट ऑफ फन विद इट एज वेल. ओके, ये बहुत पावरफुल भी होती है बिकॉज आपसे व्हेन यू टॉक अबाउट पर्सनल, दैट मींस आपकी एनर्जी जा रही है इसमें. Okay, the sigils that I've shared with you, these are something that you're going to take and copy. When you write your own intention, that has your own energy, because आप ये चाहते हो तो ये आपके अंदर से आ रही है. It has more power and it has more focus if you channelize it properly. So when it comes to your intention based sigil, all you can do is just write a sentence. Take a blank paper, write what you want. If you just want to write I am healthy, if you have a lot of health issues, you want to write I am happy and healthy. या अगर आप financial trouble से गुजर रहे हो, so you want to write that I have so and so amount of money. Okay. Or if you are generally want something like you get very irritated, आपको anxiety है या stress है, so you want to write that I am peaceful and calm and everything is working for my divine order, whatever. So ये एक present tense में आप ये sentence लिखिए. Once you write the sentence, उसमें जितने vowels हैं, just eliminate those vowels, उनको काट दीजिए. जो बचे हुए लेटर्स आते हैं उसको आप अलग लाइन में लिखें. उन लेटर्स में आप एक एक लेटर पिक करके उसको थर्ड लाइन में लिखें. जो भी रेपिटेटिव लेटर है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर टी डबल बार आ रहा है तो उसको एक बार लिखें. सो अल्टीमेटली यू विल बी लेफ्ट विद अ फ्यू नंबर्स, सॉरी अ फ्यू लेटर्स. उसमें जो लेटर बचेंगे उससे आप इंटेंशन अपने मतलब दैट इज व्हाट यू विल यूज फॉर योर सिजिल. सो सिजिल बनाने का तरीका बहुत सिंपल सा है. लाइक इट इज अबाउट योर, इट्स लाइक एन एनर्जी सर्कल. सो यू मेक अ सर्कल. ओके, दीज आर द लेटर्स फ्रॉम द सेंटेंस. फॉर एग्जांपल अगर आपका एच है तो आप सर्कल के अंदर यू विल राइट एच. सारे आपके मतलब यू हैव टू टच द सर्कल्स. ठीक है. एच आप कैसे भी बना सकते हो. यू कैन, लाइक आई सेड, यू कैन हैव फन विद इट. यू राइट एच. देन इफ देयर इज लेटर पी तो आप उसमें पी बना दीजिए. ठीक है. अगर आर आता है तो आप उसमें ऐसे करके आर बना दीजिए इन द सर्कल इटसेल्फ. और उसके बाद जब आपके जितने कॉन्सोनेंट्स बचे हुए हैं जब वो खत्म हो जाते हैं, दैट इज योर ओन पर्सनलाइज्ड सिजिल फॉर दैट वेरी इंटेंशन. That is how you create a sigil. That is how you create a personalized sigil. ओके. तो जब हमने इसको क्रिएट कर दिया है तो क्या इसको एक्टिवेट करने का भी कुछ मतलब अलग वे होता है? Absolutely. बनाना एक चीज है. Yes, बनाना एक चीज है. उसको एक्टिवेट करना is another ball game altogether. So when you talk about activating it, okay, the best way to activate anything is within nature. मीन्स अगर मुझे सपोज मैंने एक्स वाई जेड या अपने सिजिल अपनी इंटेंशन के अकॉर्डिंग मैंने बनाया, ठीक है, और मैं उसको एक्टिवेट करना चाहता हूँ, तो मुझे करना क्या होगा? नेचर तो ठीक है, लेकिन करना क्या होगा, सोचना क्या होगा ऐसा? First of all, I will actually like to tell you what you have to do. पहले तो जब वो आपका सर्कल है ना, आप उसको कट करिए. ठीक है. यू हैव टू कीप दैट सर्कल. हाउ? ओके, यू जस्ट कट इट विद लाइक पेन एंड पेपर. लीजिए अपना सिजिल ड्रॉ करिए, कट करिए. दैट्स योर सिजिल. दैट्स रेडी टू एक्टिवेट. ओके, you have to hold it in your hands and you have to feel it in your hands. And the best time to do that, बना के आप रख लीजिए, बट उसको आप फील करिए अपने हाथ में. उस चीज को आपने जिस इंटेंशन के लिए बनाया उस चीज पे फोकस करके आप उसको हाथ में पकड़िए. And when you do that, you need to be energized at that point of time. That means आपका जो frequency है, vibration है, that has to be high. That means you need to be feeling good about something. तो जब आप खुश हो, when you are vibing high, when you are feeling good, like if you have done a workout, after a workout आपकी body बहुत thrive कर रही होती है with good energy, right? So that is also a very good time to do it. And या अगर आपको कभी goosebumps आते हैं, right? So that is a very good time to do it. So when you're basically vibing high, that is when you have to hold it. तो उसमें क्या रहता है कि आपकी जो एनर्जी है, वर्कआउट के बाद आपका स्वेट होता है कई बार आपके हाथ में, या बॉडीली फ्लूइड्स है, सो उससे आप उस सिजिल को पकड़िए. That is when you make that sigil yours. That is how you actually personalize it. Okay, that is how you activate it. अब activate होने के बाद क्या है? The basic step that I said, which is required for any technique for law of attraction to work, and this is just another technique for that. All you have to do is trust in the universe, and then you have to give it to the universe. You have to let it go to the universe. So all you need to do is there's so many different ways of actually doing that. So जब आपने उसको चार्ज कर लिया, आपका एक्टिवेट हो गया सिजिल, तब आप क्या कर सकते हो?
आप उसको बर्न कर सकते हो, उसके एशेज जो है रनिंग वाटर में डिस्पोज कर सकते हो, बाहर नेचर में डाल सकते हो, किसी प्लांट के अंदर उसको बरी कर सकते हो, राइट? कहीं आपने पौधा लगाया उसके मतलब जाके आप you can put it over there. आप उसको कैंडल से भी लगा सकते हो, you can stick it to the candle and you can light the candle and let the candle burn. तो जैसे जैसे कैंडल बर्न होगी आपका सिजिल भी साथ में बर्न होता रहेगा. एंड व्हाट हैपेंस इज जब उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी, दैट एक्टिवेटेड सिजिल, when उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी, when you no longer see it, and that is when it is accepted in the universe. So जो नेचर है वो जब अपने अंदर उस चीज को संभालेगा, दैट इज व्हेन इट स्टार्ट्स वर्किंग. एंड यू हैव टू बिलीव इन द प्रोसेस, यू नीड टू ट्रस्ट दिस प्रोसेस, दिस इज फॉर. अब मेरी ये इंटेंशन है, लाइक आई ऑलवेज गिव दिस एग्जांपल, यू प्लेस एन ऑर्डर, okay, then you know that order is going to come because you paid for it, right? So similar process, you wouldn't go back and check kang gaya, right? So you go about your day and forget about this, that I have done this, and that is sigil magic. And sooner or later you will realize ये चीजें आपकी लाइफ में जो आप चाहते हो बहुत ही naturally आ जाती हैं. And I have practiced a few sigils of my own. In fact, काफी सारे sigils in, give me that blue diary. There's so many sigils that I make on my own. Sometimes I don't make a circle out of it because though thoda advanced uska level hai. I'm just telling you the basic ones that you can start with. Okay. So there are certain things that I keep on doing, which I keep in my work diaries. And when the work is done, I, take it out and I burn it out at times. So there are different ways of doing it. This is my own personalized sigils, which is created for different things. And I keep it in the diary in which we calculate our inflow and outflow. Okay, so that is how it is used, and it was done to increase it. Now it has started increasing. Now I'm going to burn it out and it's gone. So there are certain things that you need to do, and you can make your own process. You can keep the sigil with you till the time you feel like. You can burn it the when you want to, and it's not that अभी मैं उसको burn कर दूंगी तो वो sigil काम करना बंद कर देगा. Intention universe में जा चुका है. The universe has heard your prayers and universe knows what you want. तो वो चीज आप physical reality में देखो या नहीं देखो doesn't matter, because it existed in front of you. And now even if it is not there doesn't mean कि वो कभी थी नहीं. It was there, it was sub present at one point of time, so it becomes timeless, right? राइट. तो गाइस ये मुझे लगता है सिजिल मैजिक के बारे में मुझे समझ में आ गया है, तो आप सभी को भी आ ही गया होगा. ठीक है, अगर उसके बाद भी कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं. अगर हम ऑफ फीड भी हो जाते हैं, ऑफ लाइव भी चले जाते हैं, उसके बाद भी आप कमेंट या डीएम में तो ज्यादातर कर ही देते हैं, पूछ ही लेते हैं. ठीक है, क्वेश्चन कर सकते हैं. अदरवाइज आपको फ्री टैरो कार्ड रीडिंग अभी चाहिए तो आप फीड को शेयर कीजिए और पेज को लाइक कीजिए. अगर आपको नहीं चाहिए तो थोड़ी ही देर हम वेट कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा 10-20-30 सेकेंड. उसके बाद हमें ऑफ जाना है, हमारा भी सोने का टाइम हो गया है. And there are times that I feel that there was a time where a lot of tarot readers were coming online, and again I am not a tarot reader, I'm an energy reader, which I always say, but लोगों को वो समझ नहीं आता है because तभी मुझे tarot बोलना पड़ता है. Tarot is just a tool. But I want to say for the record, there was a time when the lockdown and everything, these things started cropping up. Now we make it a point that whenever we come over here, because there's tons of work that we are already doing, so this is a part of where we want to serve the community, and we feel that till the time we are live, whoever is watching us right now or later on can get the benefit out of this. So if you are lucky enough, and if मेरी किस्मत में आपको कोई गाइडेंस देना लिखा होगा तो आप अपने आप आ जाओगे. नहीं आते हो, that means this is not for you. So this is the simplest message that I would like to say. So if you have any questions, you can ask. Otherwise, we would love to go off the field, and we have tons of other people who are waiting for these things. So ये चीजें I won't say free of cost हैं. This is full of energy, okay? And if you are receptive, अगर universe ने आपको इस energy के लिए receptive बनाया तो आप अपने आप इधर आओगे, and in time, not later on. Later on, so just 11:11. Yeah, it's 11:11. So I'm saying something for the highest good of all. Yeah, and there is because this is a new deck. Okay, it's a beautiful deck. I really like it. These are genuine messages. Then question I want to ask about my husband. Please work. Shall I get a good support for Grace? Of course, and you can ask. Have you shared the feed, and Rika ji? Please check once. Let me check. Yeah. So what I would like to this is for whoever is watching at any point of time. I would actually just like to share this message.
choose general. This is called messages from heaven. He shared this feed. Yeah. Rekha ji, please feed share kariye. If you want. Okay, so this is a message for heaven for general public. Okay, whenever you are watching it, we are, see, read this. We are easing the blockages which is holding you back. Go for it. So this is what the heaven is trying to tell you. This is what the universe is trying to tell all. I would like to, answer Anne's question here. May I ask about any messages about my person? So let's say what the heaven has to say. In fact, this seems to be like a love question. So I have this another one, Power of Love. It's a very beautiful deck as well. Let me read from that, and I'll give you message as well. You can share every time. Let's see. Don't share it in the same group. Please join other groups as well, because without sharing we can't answer. So other people are also sharing. Yeah, we need to, Injustice हो जाएगा. Yeah, injustice हो जाएगा. So please Rekha ji, अलग groups join कर लीजिए. So don't share it in the same group every time. Up to you. So Anne, let's see. Okay, the message for you from your person is transformation. It says you're the power of love. Let me read it from here. It says you use the power of love to move through illusion and shift into awareness. So this is the one of the messages for Anne. Okay, that is transformation. So I think there are things which are transforming in your love life, which you need to be aware of. And in order to do that, you need to calm yourself and think about it. And let me also ask the heaven what it has to tell you. This is for Anne. Focus your mind on what you really want. We are helping. So again, and you are right in time in, you can use the sigil magic to focus as well. Sigil magic basically it's all about focusing. Technique वही है, okay, procedure वही है, but it is all about focusing. So these are the messages for Anne. And I think since there is no other question here, we're so sorry, Rekha ji. Okay, we hope next time you are able to share it in some group. So see you next time And thank you so much. Thank you guys for coming here. and joining this feed. We'll see you on Wednesday with Yes, another most probably on Wednesday. with another episode. We don't even know what it is for yet. Thank you guys. Thank you so much, guys.